बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरिया रोड क्वेटा। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 68 तक किया था। आज हम आगाज करेंगे लेक्चर नंबर 69। हमने लास्ट टाइम हम वो कर रहे थे, हम एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर गालिबन 4 था, जो आज हमने शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 4, show that 1 divided by 2 r 1 upon AB, 1 upon BC, 1 upon C है। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। 1 upon AB, 1 upon BC, 1 upon CA ले ले एलसीएम। इन कैल्शियम में ए बी सी, ए भी कैंसिल, सी बच जाएगा, बी सी कैंसिल, ए बच जाएगा, बी बच जाएगा। इसको हम तरतीब से लिखेंगे तो ये बनेगा ही हो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। दिस इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाई ए बी सी। हम क्या करेंगे, 2s डिवाइडेड बाई 4 डेल से मल्टीप्लाइड और 4 डेल से डिवाइड करते हैं। दिस इज इक्वल टू 2s, यह आएगा 4 डेल r, बिकॉज r इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल। So this is equal to 2 1s are 2 2s are 4, ये आएगा s डिवाइडेड बाई 2r इंटू 1 अपॉन डेल। हम क्या करेंगे, हम इसको यूं लिखेंगे 1 अपॉन 2r s डिवाइडेड बाई s डेल ओवर एस। डोमिनेटर और डोमिनेटर हमने दोनों को एस पे डिवाइड किया, एस तो कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2r, 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास r की इक्वल, बिकॉज r इज इक्वल टू डेल माइनस एन, मल्टीप्लाइड कर लें, ये 2r डेल r बनेगा। यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 10 हम कह सकते 1 डिवाइडेड बाई 2 r ही इज इक्वल टू 1 अपॉन ही बी, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी है। हमने क्या की है, हमने सबसे पहले कंसीडर की है राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को हमने कंसीडर की है। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी है। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, ए बी कैंसिल, सी बच जाएगा, सी 1 सी, बी सी कैंसिल, ए 1 1, सी ए कैंसिल, बी बच जाएगा, बी 1 तरतीब से लिखा। हमें पता है किसकी इक्वल है, 2s के। हमने इनको 4 डेल से डिवाइड ऑन, क्योंकि ये हमारे पास फिर हार की इक्वल आएगा और ये हमारे पास हार है और ये 4 डेल है, 2 1 2 2 4 है। इसको हमने ब्रेक की है और इसको हमने मजीद 1 अपॉन हार लिखा है, s डिवाइडेड बाई s। इन इसको हमने s से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर और डोमिनेटर दोनों को s से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया है। s इज कैंसल, या 1 अपॉन इसकी वैल्यू है हार को मल्टीप्लाइड किया। यही हमारे राइट हैंड साइड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, प्रूव दैट 1 upon r square, 1 upon r1 square, 1 upon r2 square, 1 upon r3 square is equal to a square
प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेयर। हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है 1/r स्क्वेयर, 1/r1 स्क्वेयर, 1/r2 स्क्वेयर, 1/r3 स्क्वेयर। हम सब की जगह पर वैल्यू लगा देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय डेल ओवर एस का स्क्वेयर, आर वन की वैल्यू था हमारे पास डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस ए का स्क्वेयर, डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस बी का स्क्वेयर, और नेक्स्ट है डेल डिवाइडेड बाय एस माइनस सी का स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेयर एस स्क्वेयर, 1 डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेयर एस माइनस ए का स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर एस माइनस बी का स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर एस माइनस सी का स्क्वेयर। ये ऊपर जाकर के तमाम उल्टा होंगे, यूँ आएगा एस स्क्वेयर डेल स्क्वेयर एस माइनस ए स्क्वेयर डेल स्क्वेयर एस माइनस बी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर एस माइनस सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर। अब कॉमन निकाल देते हैं, 1/, डेल स्क्वेयर इज कॉमन, अच्छा एस रह जाएगा एस स्क्वेयर एस माइनस ए स्क्वेयर, फिर आएगा एस माइनस बी स्क्वेयर एस माइनस सी स्क्वेयर। सबको फार्मूले से खोल लेते हैं, 1/, डेल स्क्वेयर इज इक्वल एस स्क्वेयर माइनस 2as प्लस ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर माइनस 2bs बी स्क्वेयर एस स्क्वेयर माइनस 2cs और लास्ट में आएगा सी स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू 1/, डेल स्क्वेयर हेड होगा 4 स्क्वेयर आएगा माइनस 2s सब में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी आएगा, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर हैज इट इज लिख लो, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर हैज इट इज हमने लिखा है। इसके बाद दिस इज इक्वल टू 1/, डेल स्क्वेयर 4s स्क्वेयर माइनस 2s a प्लस बी प्लस सी हमें पता है किसके बराबर होता है, सिंपल 2s के बराबर होता है, और a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर हैज इट इज, a बनेगा हमारे पास यूँ 1/, डेल स्क्वेयर 4 स्क्वेयर माइनस 4s स्क्वेयर माइनस 4s स्क्वेयर a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये और ये कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा हमारे पास 1/, डेल स्क्वेयर a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेयर। ए हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर 1/, r स्क्वेयर r1 स्क्वेयर r2 स्क्वेयर r3 स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर। हाँ, मुझे शुरू से सुन ले, सबसे पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। चल, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद फिर हमने क्या किए हैं, हमने r की जगह पर r1 की जगह पर r2 की जगह पर r3 की जगह पर तमाम वैल्यू लगाया। हमें पता है r किसके बराबर होता है, डेल ओवर एस
हर वन डेल एस माइनस ए, डेल एस माइनस टू, डेल एस माइनस थ्री। ऊपर का स्क्वायर अल्लाह की, नीचे अल्लाह की, ऊपर जाकर के उल्टा उल्टा सब उल्टा बनेगा। वन अपॉन डेल स्क्वायर सब में कॉमन है, एस स्क्वायर, एस माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस सी स्क्वायर रह जाएगा। तमाम को हमने फार्मूले से ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल दिया। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तमाम को हमने फार्मूले से खोल दिए। इनमें क्या कॉमन है, माइनस टू एस कॉमन है, ए प्लस बी ये मैंने अंडरलाइन की है, प्लस सी, और ये दोनों 1 2 3 4 4 एस आएगा। ये हमें पता है किसके बराबर होता है, 2s के बराबर होता है। 2 2 4s इंटू एस स्क्वायर आएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम अमूमन इनको इस वन से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। इसके बाद हम आते हैं न्यू चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, सबसे पहले 12 में क्या डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन f of x is said to be even function if f of minus x is equal to f of x for all x in the domain of f. Odd function, a function f of x is said to be odd function if f of minus x is equal to minus f of x. For example, f of x is equal to radical of x squared plus 1, replacing x by minus x, which is equal to x square plus 1, which is equal to f of x. Then we say thus f of x is even function if f of x is equal to x cube. Replacing x by minus x, that is minus x cube, thus f of x is odd function. What is even function? A function f of x is said to be even function. A function f of x is said to be even function if f of minus x is equal to f of x for all x. That is called even function. For example, हम एक फंक्शन गिवन f of x is equal to this, हमने x की जगह पर माइनस एक्स लगाया, लेकिन माइनस एक्स का स्क्वायर इन पावर अगर इवन हो, सिंपल सीधा साधा बात है, पावर इवन हो तो इवन फंक्शन है, पावर हार्ड हो तो हमारे पास क्या कहा जाता है, हॉट फंक्शन।
जाहिर सी बात इसका पावर इवन नहीं तो दोबारा पॉजिटिव है। ये देख ये वापस इसी की इक्वल है, तो f of minus x is equal to f of x, that is called even function. But odd function क्या होता है? Function f of x is said to be odd function if f of minus x is equal to minus f of x. For example, f of x हमें given x cube, replace x by minus x, replace, लेकिन इसका पावर हमारे पास हॉट है तो नेगेटिव में ये माइनस है, इट इज एफ ऑफ एक्स की जगह पर सॉरी एक्स क्यूब की जगह पर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स के, देन द फंक्शन इज सेड टू बी हॉट फंक्शन. So even function is that function in which f of minus x is equal to f of x, and hard function is that function whose f of minus x is equal to minus f of x. This is called hard and even function. Periodic function. Function f is periodic function f is periodic if there is a positive number p such that f of x plus p is equal to f of x, then p is called period of the function. But the function is called periodic function. For example, period of sine is 2 pi. By definition, f of x plus p is equal to f of x. Let f of x is equal to sine of x. Put x is equal to x plus 2 pi. Formula is equal sin alpha cosine beta plus cosine alpha sin of beta. It means f plus 2 pi is equal to f of x. Thus इधर लिखते हैं, thus 2 pi is the period of sine of x. Periodic function. A function f is periodic. A function f is periodic if there is a positive number p such that f of x plus p is equal to f of x. Then p is called period of function, but this function is called periodic function. इस period को हम नाम देते, इस function को हम नाम देते periodic function.
पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है? पीरियोडिक फंक्शन आर वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है जिसमें पीरियड हो। इट मींस कि अमूमन अगर हमारे पास x प्लस पी एफ ऑफ एक्स इक्वल आया, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक, बट p इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, पीरियड ऑफ sin of x is 2 pi. By definition, f of x plus p is equal to f of x. f of x हमें साइन गिवन है, हम x की जगह पर क्या लगाते हैं, यानी जैसे p इस वक्त हमारे पास है 2 पाई नहीं है 2 पाई। इसको फार्मूले से खोल दिया, फार्मूला हमें पता है साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा, और हमें पता है कोसाइन 2 पाई 1 के बराबर है, साइन 2 पाई 0 के बराबर होता है, यह एक साइन और यह एक 0 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 ये दोबारा हमारे पास एक्स की इक्वल आया, सो हम कह सकते दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई। हम आते हैं एक्सरसाइज पे, हम आते हैं एक्सरसाइज इस वक्त हमारे पास है 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द domain and range of the followings। पहला पार्ट हमें गिवन है कोसाइन ऑफ 2x, लेट y is equal to cosine of 2x। we know that domain of cosine of x is minus pi to x to infinity। If x is equal to 2x, then domain of cosine 2x is minus infinity to plus infinity। Domain of cosine of 2x is equal to minus infinity over 2, infinity over 2. It implies that minus infinity to plus infinity. Now, range of cosine of x minus 1 to y less than 1. Thus, range of cosine 2x minus 1 to y to 1. This is called domain and range of cosine. Y is equal to cosine of x. We know that domain of cosine is minus infinity to plus infinity. तो अगर x की जगह पर हम 2x ले लें, that also lying minus infinity to infinity, जैसे वो 2 पे डिवाइड होता है, infinity by 2 that is infinity, infinity by 2 that is infinity। Similarly range minus 1 से लेकर के 1 के बीच में इन टेबल में वैल्यू लाइन करता है, तो कोसाइन भी वही होगा हमारे पास, -1 से लेकर के 1 था।